Hello everyone, this side Priya Bhatia, and in this particular video we will talk about something called as logistic regression algorithm. अभी तक की videos में I hope you already have seen that we have talked about what is machine learning, why it is required, why there is a need to study these concepts, and in the second video I have talked about linear regression algorithm, a very fundamental algorithm in machine learning, but again a very important algorithm. Now in this video, we are moving on to start our very new algorithm that is about the logistic regression. Now if you will observe in both of the terms, in the previous video when I was talking about linear regression and in this video when I am talking about logistic regression, regression is coming into picture. And by looking into this word, you will always imagine that this algorithm will also able to solve the problem of regression task. What is regression task, by the way? It is the task or the problem where we want to predict a continuous value, right? But do you know, in the logistic regression, we only solve the classification kind of a problem, not the regression problems. Yes, when we studied the linear regression, it was solved to, do the regression problems. But whenever I am talking about logistic regression algorithm, it is majorly tried to solve the classification task where I will be having a discrete classes. Okay. Now, one of my humble requests to everyone is that please try to make sure that you will watch this video till the very end. Why I am saying so? Because this video is composed of 3 parts. In the very first part, we will try to understand what logistic regression is all about. In the second part, we will try to understand the mathematical intuition behind that. And at the very end, you will observe that I am talking about the implementation of this algorithm. Now, if you will observe, in order to understand the concept, all these 3 components are very much important. If you miss any of the component, it means you don't know the complete concept. And partial knowledge is also not good, right? So please watch the video till the very end. And one more request is please do hit like button and share this video with everyone and do subscribe to my channel. It would really mean a lot to me. Now let's get started and we'll try to understand the concept of logistic regression. So now let's try to understand the concept of logistic regression first, okay? Now see, as I told you in the introductory part of our video, that even though the word regression is there, हालांकि यहाँ पे word regression है, but you make sure that this algorithm is majorly used to solve a classification task. Classification task in a machine learning. Make sure of this, okay? अब देखो, जब भी हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करेंगे, अगेन अभी जो हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, जितने भी एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. सो व्हाट इज सुपरवाइज्ड? आई होप यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड द फर्स्ट वीडियो वेयर आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? जहाँ पे हमारे पास टारगेट वैल्यूज अवेलेबल है. किसी भी डेटा सेट के अंदर अगर मेरे पास लेबल अवेलेबल है, टारगेट अवेलेबल है, then it is something that we are calling as a supervised machine learning algorithm we supposed to apply. Now in that also we have seen that there are 2 major categories that we are trying to solve. One is the regression category और उसके लिए हमने देखा था पिछली ही वीडियो में about the concept of linear regression algorithm. I hope you all remember, right? Now in this video, we are talking about that how we can solve a classification kind of a problem via the concept of logistic regression. ठीक है? Logistic regression से हम कैसे solve कर सकते हैं किसी भी classification task को, अपने को भी ये समझना है. ठीक है? अब classification का मतलब क्या हुआ? कोई example अगर मैं देना चाहूँ तो मान लेते हैं कि मुझे classify करना है कि ये मेल spam है या नहीं है. मान लो कि मुझे क्लासिफाई करना है कि ये क्लास 0 पे बिलोंग करेगा या 1 पे बिलोंग करेगा. मान लो कि मुझे क्लासिफाई करना है कि पेशेंट डायबिटिक है कि नहीं. कहने का मतलब ये है कि या तो हमारी वैल्यू 0 होगी या फिर हमारी वैल्यू 1 होगी. हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन में ही यूज़ होगा.
मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के अंदर भी इसका यूज हो सकता है, वन वर्सेस रेस्ट एल्गोरिथम में हम उसको करते हैं, बट ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली दैट द परफॉर्मेंस इज रियली गुड in terms of binary classification task whenever we are talking about a logistic regression algorithm. I hope it makes sense. तो आज के वीडियो में if you remember in the few days back I have uploaded one video where I have talked about that how we can do the EDA on diabetic data. उस वीडियो को अगर देखना है तो स्टैट्स की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो. If you want, I can upload that video on machine learning playlist as well. तो उस वीडियो में मैंने डायबिटिक पेशेंट के डेटा को यूज़ किया था. उसी डेटा को मैं यहाँ यूज़ करूँगी. ऑब्वियसली मैं EDA नहीं करूँगी, मैं सिर्फ डायरेक्टली आपको शो करूँगी एट द एंड ऑफ द सेशन कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा. इसीलिए मैंने बोला कि इस वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है. तो वी विल से दैट वेदर अ पर्सन इज डायबिटिक और नॉट, डायबिटीज़ है पेशेंट को या नहीं है, नॉन डायबिटिक. यू कैन कंसिडर दिस एज 1 क्लास एंड दिस एज 0 क्लास. ठीक है, अगेन अ क्लासिफिकेशन काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व हियर. नाउ दैट्स फाइन, बट what is the intuition behind this algorithm? Let's try to focus on that part, on the very first part. ठीक है, ओके. मैंने बोला कि क्लासिफिकेशन करता है. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्लासिफाई करता कैसे है. तो अभी आज का जो वीडियो आने वाला है, जो वीडियो है दैट इज फोकस्ड ऑन बाइनरी क्लासिफिकेशन, जहां पे मैं 2 क्लासेस को लेके एज्यूम करके चल रही हूँ. ठीक है, बेसिकली लास्ट वीडियो अगर आपको याद हो जहां पे मैंने लीनियर रिग्रेशन कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, we have understood that in linear regression what we are trying to do is we are trying to find a best fit line which is y is equals to mx plus c, जहाँ पे m मेरा एक स्लोप है, c मेरा एक इंटरसेप्ट है, या फिर मैं इसको बोल रही थी y is equals to बीटा 1x plus बीटा 0, जहाँ पे अगेन बीटा 0 मेरा इंटरसेप्ट है, बीटा 1 मेरा स्लोप है. इस लाइन को मैं जनरलाइज कर रही थी लीनियर रिग्रेशन के अंदर बेस्ट फिटेड लाइन निकालने के लिए, जहां पे सारे डेटा पॉइंट्स जो हैं जनरलाइज्ड हो जाए. फ्यूचर की प्रेडिक्शंस भी उस लाइन की हेल्प से मैं कर पा रही थी. अब यहां पर मैं क्या करूंगी, जब मैं क्लासिफिकेशन टास्क की बात कर रही हूँ तो मुझे लाइन को जनरलाइज नहीं करना है, मुझे तो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी चाहिए एक न्यू डेटा पॉइंट की, राइट. फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ फीचर्स लिखती हूँ, फीचर F1, फीचर F2, फीचर F3, फीचर F4, फीचर F5, और यहाँ पे मेरे पास एक तरीके से टारगेट कॉलम है जो कि ये बता रहा है कि पेशेंट डायबिटिक नहीं है या पेशेंट डायबिटिक है, गिवन फ्यू न्यूमेरिक डेटा, फ्यू न्यूमेरिक वैल्यूज दैट आई हैव, राइट. इट इज जस्ट टेलिंग टू मी दैट वेदर द पेशेंट इज डायबिटिक और नॉट, दैट्स इट, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ बेसिकली वी विल train our model in such a way that it will take all these features and will give me the probability of having a value as non-diabetic and having a value as diabetic. Whichever is having a bigger value, whichever probability is bigger in a way, that will be the final result, whether it will be 0 or it will be 1. So in a way, यहाँ पर logistic regression के अंदर जो हमारा पूरा का पूरा काम होगा वो probability पे होगा. तो in a way, अगर आप देखो तो यहाँ पर भी मुझे डेटा पॉइंट्स दे रखे होंगे. फॉर एग्जाम्पल, this is a 2D graph that I have. Let me try to create it first. This is a 2D graph that I have. और यहाँ पे मेरे पास सपोज ये मेरे पास क्लास A है जिसके सारे डेटा पॉइंट्स एक साथ यहाँ पे लगे हुए हैं. एक मेरे पास क्लास B है जिसके सारे डेटा पॉइंट्स यहाँ पर हैं, राइट. मुझे क्या करना है कि अगर एक न्यू डेटा पॉइंट आता है तो इसको पता चल जाए कि ये, मान लेते हैं ये क्लास 0 है और मान लेते हैं कि ये क्लास 1 है. So what I want is, I want my model to automatically understand that this particular portion will belong to class 0 and not from class 1. So in a way, they're kind of a line, but here it's not a exact value which I want to find out. What I want to find out is the probability of that particular thing, right? So in order to find out the probability, we have something called as sigmoid function. अब ये फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ आप लोग देखोगे फ्यूचर सेशंस में भी.
इवन डीप लर्निंग के अंदर एक्टिवेशन फंक्शन में भी इसका नाम आता है. करता क्या है ये सिग्मॉइड फंक्शन? व्हाट इज द एक्चुअल working of the sigmoid function? It's kind of a function which is basically used to determine the probability. Sigma of x is equals to 1 divided by 1 plus e to the power minus x, where x is the input entered by the user. So, इस तरीके से इस फंक्शन की हेल्प से मैं प्रोबेबिलिटी को निकाल सकती हूँ. अगर मैं इस फंक्शन को एक तरीके से शो करूं, this is a kind of a sigmoid function graph that we have. Okay, this is a kind of a sigmoid function graph that we have. So here you can clearly see that sigma of z or phi of z is 1 divided by 1 plus e to the power minus z. तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो 0.5 से बिलो जो भी वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी की, it will lie into the 0 category and above that will lie into the 1 category. तो बेसिकली अगर आप, दिस इज समथिंग दैट इज डिफाइंड एज थ्रेशोल्ड, और हम क्या बोलते हैं कि अगर थ्रेशोल्ड 0.5 से 0.5 है मान लेते हैं, तो व्हाट वी कैन डू इज व्हाट वी कैन से इज इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन पॉइंट इज लेस देन 0.5, maybe the class belongs to 0, and if it is bigger, less than or equal to, if it is bigger than 0.5, then we can say that it will belong to class 1. Now the question is, even though you can change this threshold, but we will talk about this maybe on the later part of the section. But as of now, what we want to generalize here, we want to make this particular beta 1 x plus beta 0 as the probability function. So what we can do here is, we can say p of x is equals to 1 divided by 1 plus e to the power minus, instead of x we're writing beta 0 plus beta 1x. That's a kind of a probability, that's with the help of which we will be able to evaluate what is the probability that we will be able to get. If you will solve this particular function, I think I can take this as 1 plus 1 divided by e to the power beta 0 plus beta 1x, right? Or I can write it like e to the power beta 0 plus beta 1x divided by 1 plus e to the power beta 0 plus beta 1x. So here what is happening is, we will be able to get the probability of x like this. Why I am doing so? I just want to show you something here. That's the only reason. So if suppose this is the probability of class belonging to 0, so if I will ask you what is the probability of class belonging to 1, what will be your answer? Obviously your answer will be, it will be 1 minus p of x, which is nothing but 1 minus e to the power beta 0 plus beta 1x divided by 1 plus e to the power beta 0 plus beta 1x. Or in other words, I can say that this is something which will be, we can take the LCM, so we will be able to get the value as 1 divided by 1 plus e to the power beta 0 plus beta 1x. If I'll just divide these two equations, equation number 2 is this and equation number 1 is this. First equation and the second equation, if I'll divide these two equations, you can say p of x is the probability of belonging to class 0 and 1 minus p of x is the probability belonging to class 1, because we will be having two classes, right? So if I just divide these two things, you will observe one very important thing in a logistic regression, which I really want to show you. The output that you will be able to get is nothing but e to the power beta 0 plus beta 1x. If you will take log base e on both sides, you know we will be having something on the power. In logarithmic it can come ahead, so it will be log base e p of x divided by 1 minus p of x, which is equals to beta 0 plus beta 1x. Beta 0 is the intercept, beta 1 is the slope. तो बेसिकली अगर हम देखें उसी सेम लाइन, वही सेम इक्वेशन जो हम लीनियर रिग्रेशन में यूज कर रहे थे पिछली वीडियो में, उस इक्वेशन को अगर मैंने यहाँ पे निकालने की कोशिश करी तो मेरे पास रिजल्ट में क्या आया? I got a result which is in the form of log function, and that's what we called as logarithmic
function that we will be able to get in a logistic regression. That's why logistic. Log function is there. Now, if you will try to evaluate the value of p of x when it is less than 0.5 and when it is bigger than 0.5, you will be able to observe that the answer will be somewhere negative and the positive. And that's why if you will observe in a graph, the value will be, when it is less than 0.5, will be 0, and if it is bigger than 0.5, it will be 1. Right? This is a function that is pretty much important to understand, and how it came up. So basically, whenever we are talking about something called as logistic regression, the only function which plays a very important role is the sigmoid function, because this function will help me to give the probability of both of the classes, and whichever is having a higher probability, that will be the final class where my new data point will go, or where my new prediction will happen. Make sense? I hope you will be able to understand now the concept of what we are doing in a logistic regression. Many people think कि sigmoid function जो है ना, वो हमें डायरेक्ट वैल्यू देता है 0 या 1. ऐसा नहीं है. sigmoid function तो मुझे probability देगा. अब वो probability 0 की ज्यादा है या 1 की ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आउटपुट 0 होगा कि 1 होगा. बट अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि what this sigmoid function will give to us, your answer should be, it can give to me the probability. Even when we will do the implementation at the end of the session, I will show you can see the probability as well. Make sense? Okay, moving ahead. अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि कैसे ये लॉजिस्टिक फंक्शन की तरह से अप्रोच करते हैं हम इसके अंदर. वो बात क्लियर हो गई हमें. अब इट्स योर वर्क, try to approach. When I am saying by default threshold जो है वो 0.5 सेट होती है, तो मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप p of x को मे बी 0.2 लेके देखो, और एक तरफ आप p of x को मे बी 0.7 लेके देखो ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर, और चेक करो. Obviously when you will take 0.2, you will be able to get log base e 0.2 divided by 0.8, और यहाँ पर आप लोग का आंसर होगा 0.7 divided by 1 minus 0.7 is 0.3. Try to check it out. What will be the value you will be able to get, and make it relate to 0 or 1. It's your work. Now, moving ahead to the next part of our session. ठीक है, ये तो मैथमेटिकल इंट्यूशन के बारे में हमने जान लिया कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में इस तरह से वर्किंग होती है, सिग्मॉइड फंक्शन काम करता है. लाइन तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन को यूज कर रही हूँ. ठीक है, दैट्स फाइन. पर क्या लगता है, जो कोस्ट फंक्शन या एरर फंक्शन हमने लीनियर रिग्रेशन में पढ़ा था, क्या वही सेम कोस्ट फंक्शन यहाँ पर यूज होने वाला है? व्हाट डू यू थिंक? द आंसर इज अ बिग नो. क्यों? क्योंकि वहां पर तो मैं कॉन्टिन्यूस वैल्यू निकाल रही थी. तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि लेट्स टेक अ डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू दैट आई हैव, है ना. बट यहाँ पे मैं क्लासेस पे वर्क कर रही हूँ, तो यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट इज द कोस्ट फंक्शन और द एरर फंक्शन दैट वी हैव इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन. तो यहाँ पे अगर मैं कोस्ट फंक्शन की बात करूं, नाउ लेट मी राइट इट एंड देन यू विल ऑब्जर्व व्हाट आई एम राइटिंग हियर. द कोस्ट फंक्शन फॉर अ प्रोबेबिलिटी p ऑफ x, जो कि मैं बोल रही हूं प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी, और एक और चीज है y, जो कि मैं बोल रही हूं ऑब्वियसली एक्चुअल वैल्यू होगी, जो कि मेरे डेटा में प्रेजेंट होगा. दैट इज समथिंग इक्वल्स टू when the value of y will be equals to 1 and when the value of y equals to 0. Now observe this. मैं कह रही हूं जब y की वैल्यू 1 होगी, मतलब जो एक्चुअल में मान लेते हैं कि पेशेंट डायबिटिक है, उस टाइम पे कोस्ट फंक्शन होगा नेगेटिव ऑफ log ऑफ p ऑफ x. और जब y की वैल्यू 0 होगी, उस टाइम पे जो मेरा फंक्शन होगा दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 माइनस p ऑफ x. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोस्ट फंक्शन इस तरह से कैसे आया. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. प्लीज मेक श्योर दैट यू विल अंडरस्टैंड इट थॉरली, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक तरीके से प्रॉब्लम रहता है इस कोस्ट फंक्शन के अंदर. बहुतों को पता ही नहीं होता कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कोस्ट फंक्शन क्या होता है, और जिनको पता होता है उनको कंफ्यूजन रहता है कि ये कैसे आया.
समझो इस चीज को। मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, एक्चुअल में पेशेंट डायबिटिक है. व्हाट आई एम सेइंग हियर दैट द पेशेंट इज डायबिटिक. ठीक है, अब मान लेते हैं कि प्रिडिक्शन ये आई कि पेशेंट डायबिटिक नहीं है. सो P of x says it is 0. तो what is the value of log 1 and what is the value of log 0? So you all know log 1 is 0 and log 0 is minus infinite. Is everyone agrees with me on this point? अब यहां पे अगर आप देखो log 1 is 0. What I am saying is, in first scenario, in case 1, let's consider the case 1, where I am saying that my P of x, the prediction part is 0. Probability निकली, probability निकालने के बाद 0 की probability ज्यादा आई, इसीलिए final output जो है मेरा वो 0 आया. लेकिन एक्चुअली तो पेशेंट डायबिटिक था, y की वैल्यू 1 थी. तो क्योंकि y की वैल्यू 1 थी, तो आई विल गो टू दिस पर्टिकुलर कोस्ट फंक्शन 1, एरर फंक्शन 1. तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे कोड का एरर कितना होगा, what will be the error? So it is log of P of x. What is the value of P of x? It is 0. Log of 0 is infinity, minus, minus, plus. Means what I am saying is error is too much. Error is too much, right? Error is too high. What does that indicate? That indicate a very simple scenario. What do you think? Is this model is good or bad? Obviously model is bad. If a person is diabetic, my model should show that yes, that person is diabetic. But what this is showing? This is showing that the person is not diabetic. That's a critical issue, right? At least in healthcare domain, it's a very critical issue. So that's why if you will observe in this particular case, error is also too much. But if I'll go to the case number 2, where I'll say that my P of x is also 1, prediction is also 1, y is also 1, that's great. That's super awesome. Why? Because in this case, if I'll say what is the error, you will instantly say to me, it will be log of 1, which will be 0. Error will be 0, which is too less or not at all, I would say. And that's so true. Why? Because in this case, I can say that my model is working fine. My model is doing great, right? That is what I want. But in this above case, my model is doing very bad. So in that case, that's so true. My error should be too high. Let's observe the case number 3. In case number 3, I'm saying that, my value of P of x is 0 and my value of y is also 0. Means person diabetic है भी नहीं और prediction भी ये कह रही है कि person diabetic नहीं है. तो ये एक तरीके से क्या हो गया? True false, true negative. This is something that we called as true negative, right? I think आप लोगों ने confusion matrix की मेरी वीडियो देखी होगी. जिन्होंने नहीं देखी, please refer that video. You will be able to understand what I am saying here. And this is something that we can say in terms of machine learning as true positive, right? This is something that we say it as false negative. ये तीनों टर्म, चारों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए. जिनको नहीं पता, please watch my confusion matrix video. You will be able to get a point. Okay, let's move ahead. मैं क्या कह रही हूँ? P of x भी 0 है, y भी 0 है. Let's move ahead. So it means I will refer this particular cost function. So what I'm saying is that the value is negative of log of 1 minus P of x, which is 1 minus 0. So it will be negative of log of 1, which will be nothing but is equals to 0, can I say? And that's so true. That's so true. What I'm saying here is that the error is equals to 0. That's so true. Why? Because क्योंकि ये हमारे पास ट्रू नेगेटिव है, डायबिटिक नहीं है. मॉडल भी बोल रहा है, मतलब मॉडल इज डूइंग अ गुड जॉब, मॉडल इज डूइंग ग्रेट. अगेन सेम थिंग I will say, model is doing great. Now moving ahead to the last case, case number 4, where what I'm saying is that my value of P of x is equals to 1, but my value of y
is also 0. Means diabetic तो नहीं है पर prediction आएगी वो है. Again, what will be my error? Error will be equals to, again, negative log of 1 minus p of x, 0, infinite. So error फिर से क्या आ गया? Error फिर से infinite हो गया. मतलब कि क्या हुआ? क्योंकि ये क्या था? This is false positive, right? This is false positive, which is, that's why it should have error very high. That's why I can say here, yes, model is doing very bad. Can I say model is doing very bad job here? And that's the major reason that I'm happy when I'm saying that error is infinite. And that's how the researchers have designed this coast function mathematically. In such a way कि जैसे ही prediction सही हो रही है, अगर आप observe करो, जैसे ही prediction सही हो रही है, error 0 पे जा रहा है. जैसे ही prediction गलत हो रही है, error infinite पे पहुंच रहा है. उसका मेजर रीजन यही है ताकि मेरा मॉडल उसको समझ सके, उसको प्रिडिक्ट कर सके. अब कुछ लोग मुझसे ये चीज पूछते हैं कि लीनियर रिग्रेशन के अंदर तो हम एम और सी को बार बार रेक्टिफाई कर रहे थे, राइट? ऑप्टिमाइजर ग्रेडियंट डिसेंट वहाँ पे काम कर रहा था. हमने देखा कैसे हम एम और सी की वैल्यू को या बीटा 0 या बीटा 1 की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं. यहाँ पर भी सेम चीज ट्रेन हो रही है ना? क्योंकि बीटा 0 बीटा 1 यहाँ पर भी है, इस इक्वेशन में भी है. But the only point here is that after getting a proper training of my model, how this error function is working in terms of a classification task. I hope I'm able to get a point. What I'm saying here, you will be able to understand. Now, moving ahead, अगर मैं इसी चीज को अब implement करके दिखाऊं, ये तो हो गया mathematical terms में कि किस तरह से logistic regression work करता है, कहाँ पर ये differ करता है linear regression से. Although दोनों में ही regression word आ रहा है, but make sure logistic regression is something used for a classification kind of a task, and I have given you the complete mathematical idea behind that as well. अब अगर मैं सेम डायबिटिक डेटा को लेती हूँ, ठीक है, कोलैब फाइल के अंदर मैं क्या करती हूँ, मैं एक बार के लिए कनेक्ट कर लेती हूँ इसे. इफ यू वांट टू डू इन योर ओन सिस्टम, यू कैन ऑल्सो डू दैट. व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट into my Google Drive and will access the data set first. So you can just see that. Let's wait for a while. Meanwhile, what I can do, I can import pandas as PD, import numpy as np. Now make sure that I will not do any of the EDA task here. Let me just zoom the screen bit so that everyone will be able to see my screen. Okay. Import matplotlib .pyplot as plt. Import cbone as SNS. Okay, perfect. Let me try to run this as well. Connect to Google Drive. Done. It's connected. I am allowing. Perfect. Now, here if you will observe, once it is connected, I will be able to access my data set. So let me refresh it a bit. Done. Now here what I can do is, I can go to my YouTube sessions, and inside that I will be having logistic regression and the data set. So I can copy this path. It's done. Now what I can do is, data को extract कर लेते हैं pd.read_csv. इसी same file का मैंने if you will remember, I have done the EDA as well. So if you really want to check that EDA वाला part, you need to check the file present, video present inside the stats playlist, diabetes.csv. इसको देखने के लिए कि topmost 5 records क्या है, I can call a head function. Make sense? तो head function call हो गया. अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो, मेरे पास कुछ फीचर्स हैं, कुछ मेरे पास फीचर्स हैं. लास्ट में मेरे पास आउटकम है. If I will say, how many unique values outcome is having, it is either having 0 or 1. तो 0 indicate कर रहा है कि person diabetic नहीं है, obviously 1 indicate कर रहा है कि person diabetic है. अगर हम यहाँ पर देखें तो
यहाँ पे इम्बैलेंसिंग की भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर ईडीए में यू विल ऑब्जर्व कुछ जीरो वैल्यूज प्रेजेंट है जिसका कोई सेंस नहीं है, जहाँ पे इम्प्यूटेशन करने की ज़रूरत है। वो सब चीज़ें मैंने दूसरी वीडियो में बताई हुई हैं, जो कि मैं रेफर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन वीडियो में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आई विल रेफर दैट वीडियो। बट यहाँ पे मेजर टास्क क्या है? यहाँ पे मेजर टास्क है मुझे आपको शो करना कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं स्प्लिट कर लेती हूँ मेरे डेटा को दो पार्ट्स में, फीचर्स, इनपुट फीचर्स जो कि x लेंगे। सो हियर x इज टेकिंग द इनपुट फीचर्स, ठीक है, एंड हियर y is taking the target column, target value और you can say target outcome, जो कि हमारा इस डेटा सेट में है। तो मैं कह रही हूँ x इज इक्वल्स टू डेटा डॉट ड्रॉप, और मैं क्या करती हूँ, मैं ड्रॉप कर देती हूँ किसको, आउटकम को। अगर मैं ड्रॉप कर दूँ तो मेरा काम चल जाएगा। सो आई कैन से कॉलम्स इज इक्वल्स टू आउटकम, ठीक है, और क्योंकि मुझे कॉलम वाइज करना है तो एक्सेस क्या होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक्सेस इज इक्वल्स टू एक्सेस इज इक्वल टू 1, ठीक है। y क्या होगा, y ऑब्वियसली डेटा होगा आउटकम, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास ये मैंने स्प्लिट कर दिया x और y के अंदर। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे ट्रेन टेस्ट तक चलाना होगा, क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना है ट्रेनिंग टेस्टिंग में, ठीक है। तो उसके लिए आई नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम sklearn इंपोर्ट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन, सो डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन, और यहां पे इंपोर्ट करूंगी मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, ठीक है। उप्स, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब यहां पे व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक what are the variables for which you want to split. So I can take x train and x test, I can take y train and y test, और यहां पे मैं फंक्शन कॉल कर दूंगी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर ऑब्वियसली x एंड y विल गो। इसके अलावा इफ यू वांट यू कैन ऐड, यू कैन सी राइट व्हाट इज द टेस्ट अंडरस्कोर साइज, कितना प्रोपोर्शन लेना है, यू कैन ऐड रैंडम अंडरस्कोर स्टेट। वो क्या करेगी, अगर आप ऐड करते हो, अगर आपको चाहिए कि हर एक आइट्रेशन में सिमिलर सैंपल ही आपके पास आए ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, तो रैंडम सेट का भी पर्पस वहां पर आ जाएगा। बट अभी के लिए आई कैन टेक रैंडमली एनीथिंग, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज होंगी उसके अकॉर्डिंग ये चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू कॉल माई मॉडल, सो फॉर दैट आई नीड टू कॉल फ्रॉम sklearn डॉट linear underscore model, and here I can import what, logistic regression, logistic, I'm just waiting for it to come, yeah it came, ठीक है। मॉडल कॉल कर दिया, अब मॉडल को अप्लाई भी कर देते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मॉडल अप्लाई हो गया। उसके बाद ये जो स्टेप्स मैं कर रही हूँ ना, दैट विल बी कॉमन ऑलमोस्ट फॉर एवरी एल्गोरिथम व्हाटएवर यू विल स्टडी, दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू से इंटरनल समझना जरूरी है। एंड वन मोर थिंग, मेनी स्टूडेंट्स आस्क टू मी दैट एल्गोरिथम में कहीं पे भी अटक जाते हैं, कुछ भी अगर समझ नहीं आता, पैरामीटर समझ में नहीं आते, तो विच book should I refer? I would suggest instead of going for one book, refer the documentation. At least in AI, in data science, in machine learning stuff, documentation is something which you can blindly faith on apart from going for any random books. So if I'll say model.fit, I can fit my model, my training data on that. So it will be x train, comma, y train that we have, right? So it's done. Once it is done, our logistic regression model will be ready. Now I can make a prediction y underscore pred, which is equals to, what I can do is I can say model.predict, and here I can call my x underscore test. And if you want to see the predictions, you can see that. Now you will be able to get the outcome. ये सब आउटकम है, या तो 0 वैल्यू आएगी या 1 वैल्यू आएगी। अब आपके पास टेस्ट वाले आउटकम भी तो है ना, टेस्ट भी है, प्रिडिक्ट भी है। अगर आपको चेक करना है दोनों को साइड बाय साइड रख के, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ डेटा फ्रेम, p डॉट डेटा फ्रेम, राइट। एंड यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि एक्चुअल क्या है, एक्चुअल डेटा यू कैन से एज y अंडरस्कोर टेस्ट, और प्रिडिक्टेड डेटा यू कैन से एज, जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है, एज y अंडरस्कोर प्रेड। और इसको you can define it inside maybe some predictions data frame,
राइट? और उसको आप लोग कॉल भी कर सकते हो फॉर योर रेफरेंस. आई एम जस्ट शोइंग टू यू हाउ वी कैन डू दैट. मेक सेंस? तो हर एक रिकॉर्ड के लिए correspond to every record we will be having what is the actual data, what is the predicted one, or what is the actual outcome also makes better sense, what is the predicted outcome by the model. अब obviously यहां पर ये सब चीजें आने के बाद हमें बेसिकली चेक क्या करना है, मॉडल की एक्यूरेसी क्या होगी, प्रिसीजन क्या होगा, रिकॉल क्या होगा, वो सब फैक्टर्स हम चेक कर सकते हैं. उसके लिए अगेन ये सब चीजें होती क्या है, प्रिसीजन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, इसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है. मैं अगेन डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी सो दैट यू कैन रेफर दैट वीडियो एज वेल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो इस वीडियो को समझने के लिए एक तो आपको ईडीए वाला पार्ट वाली वीडियो समझनी पड़ेगी इससे पहले, और एक और कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाली वीडियो समझनी पड़ेगी. अगर ये दोनों वीडियो समझ में आ गई देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स व्हाटएवर आई एम सेइंग हियर. अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ आई टोल्ड यू राइट, सिग्मॉइड फंक्शन हमें प्रोबेबिलिटी देता है. वो प्रोबेबिलिटी हम देख भी सकते हैं. कैसे? इफ सपोज आई वांट टू चेक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of the predictions that I got, what you can do is you can say model dot predict underscore proba is the function, and here you can refer x underscore test. तो होगा क्या कि आपके पास टेस्ट की प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट आ जाएगा. यू कैन सी राइट, प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट, द रिटर्न्ड एस्टिमेट्स फॉर ऑल क्लासेस आर ऑर्डर्ड बाय द लेबल ऑफ क्लासेस. Okay, now if I'll just show you this particular value, so it will be y underscore pred underscore probability, right? I can show you. So you can see that for every particular record that you have, you will be having the probability. Maybe for 0 it is, for 1 it is, for 0 it is, for 1 it is. क्योंकि 0 की ज़्यादा है तो 0 आउटपुट आएगा, यहाँ पे भी 0 की ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे 1 की ज़्यादा है. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम भी हमेशा 1 होगा. दैट इज समथिंग विच वी ऑलरेडी नो, राइट? तभी हम बोलते हैं पी ऑफ एक्स अगर क्लास ए की प्रोबेबिलिटी है तो 1 माइनस पी ऑफ एक्स जो है वो क्लास बी की होगी, क्योंकि दोनों का सम क्यूमुलेटिव हमेशा 1 के इक्वल होता है. तो जिस भी क्लास की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी दैट विल बी द फाइनल प्रेडिक्शन गिवन बाय आवर मॉडल, राइट? अच्छा, नाउ इफ सपोज आई वांट टू चेक द एक्यूरेसी, so let's give you this as an assignment problem. There, from sklearn we can directly import a confusion matrix and accuracy. Complete this code by determining, so I will attach the collab file in the description or the comment section of this video. So what you're supposed to do at the very end is, what I want is just check it out. So see, in every video at the very end I will give you some assignment thing which I want you to do the research. ठीक है, मैंने implement करके दिखाया कि कैसे algorithm work करता है. अब मुझे आप बताना इस सेम फाइल में जहाँ पे हमने कोई ईडीए नहीं किया, जहाँ पे हमने रैंडमली डेटा को लिया, ठीक है, सिर्फ इंप्लीमेंट किया लॉजिस्टिक रिग्रेशन को, मुझे ये बताओ कि मॉडल का एक्यूरेसी स्कोर कितना आ रहा है, रिकॉल कितना आ रहा है, प्रिसीजन कितना आ रहा है. उस वीडियो को वॉच करना, देखना, उसके बाद बताना, समझ में आ जाएगा. सो व्हाट आई वांट इज, आई वांट एज अ today's, I would say, problem for you all, or you can say today's assignment for you all is that tell me the accuracy, precision, recall and F1 score. ये सब बातें मैंने बताई हुई हैं for this model. Okay, इस स्पेसिफिक मॉडल के लिए मुझे ये बताना है आप लोगों को, और आप लोग फाइल्स भी अटैच कर सकते हो. इफ यू वांट टू अटैच, आई कैन गो एंड चेक इट आउट. इवन दैट फाइल एनीवन कैन गो इन योर गिटहब प्रोफाइल एंड चेक इट आउट. सो दैट वुड बी अ बेटर आइडिया इफ यू कैन डू दैट एज वेल. ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम हुआ जो आपको करके देना है. मेक सेंस? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. तो इस तरह से लॉजिस्टिक रिग्रेशन की वीडियो हमारी खत्म होती है. तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? इस वीडियो में हमने देखा सिग्मॉइड फंक्शन के बारे में, जो कि मेजर हीरो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम का. इसके अलावा हमने पढ़ा डेरिवेशन, कैसे वो लॉजिस्टिक फंक्शन की तरह से वर्क करता है. इसके अलावा वी हैव स्टडीड दैट व्हाट इज द कोस्ट फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू एज वेल. उसके अलावा वी हैव स्टडीड द इम्प्लीमेंटेशन. यहाँ पर फ्यूचर में एक और कॉन्सेप्ट में लेके आऊंगी, दैट इज अबाउट द AUC ROC कर्व, जो कि
काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं बोल रही थी कि हम थ्रेशोल्ड को ऊपर नीचे कर सकते हैं, वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट का वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाता है. तो दैट कॉन्सेप्ट आई विल टेक इन अ सेपरेट वीडियो, बट आज का वीडियो लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे फोकस था, उसी पे फोकस रखते हैं. और आई होप ये वीडियो आपको बहुत इंसाइटफुल लगा होगा. इफ यस, please hit like button, make sure to subscribe to this channel, and make sure to share this video with everyone so that everyone can learn and implement these algorithms. Implementation is easy, but mathematical intuition is something which I really want everyone to understand. With this, let's end this video. I hope you find this video insightful. Bye bye everyone, happy learning to all. मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ. See you all.